Space technology, spacecraft, all those objects sent in space, satellite, shuttle, etc. अर्थ 100 किलोमीटर, कारमेन लाइन, ये वाली लाइन कारमेन लाइन, इसके ऊपर स्पेस. सैटेलाइट ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट, ग्रेविटी. इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट. इनर ऑर्बिट विद इन अर्थ्स ग्रेविटी, आउटर ऑर्बिट आउटसाइड अर्थ्स ग्रेविटी. इसका एग्जांपल चंद्रयान, मंगलयान एक्सेट्रा. रीयूजेबल शटल, शटल रीयूजेबल. या थ्रेड extravehicular activity, also known as spacewalk. Unthird, EVM, astronaut is free and inspent. एग्जाम्पल गगनयान, रीयूजेबल. ये जो है सैटेलाइट नॉट रीयूजेबल. स्पेस जंक इन केसलर सिंड्रोम. ठीक, इस तरीके से. फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा विद हेल्प ऑफ रशिया, 19 अप्रैल 1975. Rocket, it is a motor or engine used in launch vehicles for spacecrafts, constructive, and missiles, warhead, destructive. Two parameters of studying orbits: distance of orbit and position of orbit. Distance of orbit, low Earth orbit 50 to 200 kilometer. Position of orbit, polar orbit. ये सब. मीडियम अर्थ ऑर्बिट 5000 to 20,000 किलोमीटर. इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल ऑर्बिट. फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर. फिर इक्वेटोरियल ऑर्बिट. फिर हाई अर्थ ऑर्बिट. ठीक, आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट. वाई सैटेलाइट डू नॉट फॉल ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू ऑर्बिटल स्पीड. लेस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मोर ग्रेविटी, मोर ऑर्बिटल स्पीड. More distance, less orbital speed. Orbits. Polar orbit. It is a low Earth orbit, LEO, 50 to 200 kilometer. Only for a certain time satellite is in front of certain location in 24 hours. Mapping, photograph, data, comparison with previous day. That is remote sensing satellites. But problem of shadow. Second, polar sun synchronous orbit. Standard or best orbit for remote sensing satellites. It looks like at every moment of time satellite follow path of sun, so no shadow. Type of polar orbit. फिर आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 24 आवर्स 1 रिवॉल्यूशन. वेस्ट टू ईस्ट, ओनली सर्कुलर अराउंड इक्वेटर, 36,000 किलोमीटर 24 आवर्स, 22236 माइल्स. ऑल ठीक. All geostationary are geosynchronous, but all geosynchronous are not geostationary. अब geosynchronous orbit क्या होती है? 24 hours 1 revolution, west to east and east to west, circular and elliptical. Inclined geostationary orbit, 36,000 plus minus 5 by 5 to 6,000 kilometer. Launch vehicles. Fuel we used: solid, liquid, oxidizer. Solid, hydroxyl terminated polybutadiene. Liquid, unsymmetrical dimethyl hydrazine. Oxidizer, nitrogen tetraoxide. First generation satellite launch vehicle, SLV, 4 stages, all solid, 4S. 50 kgs to LEO. Example Rohini satellite 1980. Second generation augmented SLV retired, 5 stages, 150 kg to LEO. Third generation PSLV, 4 stages, SLSL. Fourth generation GSLV, 3 stage, SL cryogenic. PSLV और GSLV. Polar satellite launch vehicle, ये जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल. इसका पर्पस टू पुट पोलर सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू LEO पोलर्स. इसका होता है पर्पस टू पुट इनसैट और GSAT सीरीज इनटू GEO. यहाँ पे IRNSS 7 satellites, 300 kg in GEO and GTO, 36K plus 5 or 6K.
PSLV CII 1380 kg, Chandrayaan-1 3 lakh kilometer, PSLV C-25 मंगलयान 1350 kg 400 लाख किलोमीटर। यहाँ पे आपके वेरिएंट्स हैं GSLV वाले में। GSLV MK ये आपका 10 है, 1500 टू GTO, ये आपका 1900 टू GTO। ये GSLV MK2 है, 2500 kg टू GTO और 5000 kg टू LEO। GSLV MK3 4000 टू GTO, 8000 to 10,000 kg to LEO, 8 to 10 tons। Chandrayaan-2 3877 kg, इसी पे लियो फ्यूचर गगनयान 1 स्पेस स्टेशन। यहाँ पे कन्वेंशनल प्लेन और जेट प्लेन। कन्वेंशनल प्लेन ट्रोपोस्फेयर, समटाइम इन स्ट्रेटोस्फेयर टू, ट्रोपो प्लस स्ट्रेटो। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल विंड्स, more turbulence, fly till where O2 is present। Jet plane, more move very easily and smoothly in stratospheric region, only strato, mostly horizontal winds, very less vertical winds, less turbulence, fly till O2 is present, but rocket it carry extra oxidizer, height where oxygen is not present। Difference between jet plane and rocket, 1 Mach number at 0 degree Celsius temperature, speed of sound in air 3 equal to 332 mbs, 1 Mach number, speed change with temperature of air, dense लाइट, टेम्परेचर कम या टेम्परेचर ज़्यादा। सबसोनिक स्पीड लेस देन 1 मैक, सुपरसोनिक स्पीड 1 मैक टू अप टू 5 मैक, हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 5 मैक स्पीड। ये आपका टर्बोजेट, ये टरबाइन है। यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्रेशन हो गया, फिर ये जो है ये कंबशन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ आपका जो है एक्सपेंशन है। ये एयर गोज़ आउट बाय सबसोनिक स्पीड। फिर टर्बोजेट हैव सबसोनिक स्पीड, हाइट अबव 15 to 20 किलोमीटर, ठीक, हाइट 15 to 20 किलोमीटर हो गया। इसके बाद रैमजेट लिक्विड प्रोपोलेंट इंजन है, इसका रशिया से है। रैमजेट इंजन विल स्टार्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ टर्बोजेट। इसमें जो एयर बाई सबसोनिक स्पीड यहाँ गई, ठीक, ये सबसोनिक स्पीड से गई। ये कंप्रेशन वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा कंबशन, फिर यहाँ जो है ये होगा एक्सपेंशन, फिर यहाँ जो है ये एयर आउट होगी बाई सुपरसोनिक स्पीड। सबसोनिक से एंट्री हो रही है और सुपरसोनिक से बाहर आ रही है। जनरली रैमजेट हैव सुपरसोनिक स्पीड 3 to 6 मैक, हाइट 25 to 30 किलोमीटर। इसके बाद सुपरसोनिक स्पीड से हम आते हैं स्क्रैमजेट पे, हाइट अबव 30 किलोमीटर। स्क्रैमजेट इंजन विल स्टार्ट एयर एंट्री बाय सुपरसोनिक स्पीड, यहाँ सुपरसोनिक से आ रहा है। फिर ये कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे आपका कंबशन हो गया और ये वाला पूरा एरिया आपका हो गया एक्सपेंशन। यहाँ एयर गोज़ आउट बाय हाइपरसोनिक स्पीड, ठीक। ये हाइट 25 to 45 किलोमीटर, बट ओनली टिल वेयर O2 इज़ प्रेजेंट। हाइपरसोनिक स्पीड, जनरली स्क्रैमजेट इंजन्स हैव हाइपरसोनिक स्पीड 25 to 40 मैक। इसके बाद स्क्रैमजेट में जो है सुपरसोनिक, कंबशन और रैमजेट। इंडिया हैव रैमजेट बट इंडिया डिड नॉट मेड इट, इंडिया गॉट इट फ्रॉम रशिया। इसरो स्क्रैमजेट TD 2016 टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपिंग ऑन स्मॉल स्केल एंड फर्दर हैव नीड of improvement। First two stage of GSLV are similar to PSLV because we are using same nature of propellant, solid or liquid।
But third stage is totally different. Cryogenic stage, low temperature based technology है. Within cryogenic propellant, liquid hydrogen, because gaseous natured fuel are difficult to carry, ये danger है, is used as fuel at -253 degrees Celsius and liquid O2 as oxidizer at -183 degrees Celsius. Why low temperature? To convert gas into liquid. Why to convert? Because gaseous nature fuel are difficult to carry. इसके बाद स्पेस मिशन, UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, coordinated international space missions. Many countries are planning to make their own space laws. If any mishappening due to X country, what compensation will that country is liable for? India did not make any space law till date. Country's self-declaration. स्पेस मिशंस, इंडिया और इंटरनेशनल. इंडिया में आपका सक्सेसफुल स्पेस मिशन ऑफ इंडिया और फ्यूचर स्पेस मिशंस. सक्सेसफुल में आपका है चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008, फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया. मंगलयान फर्स्ट, ये 5 नवंबर 2013, सेकेंड इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन. फिर एस्ट्रोसैट सितंबर 2015, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी MWO. फिर चंद्रयान 2 22 जुलाई 2009. फिर चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 से, ठीक है, टच्ड साउथ पोल. फिर फ्यूचर वाले में आदित्य, गगनयान, निसार, मंगलयान 2, शुक्रयान, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया. सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान फर्स्ट, PSLV C2 सतीश DSP, लॉन्च मास 1380 kg, पेलोड्स 6 इंडिजीनियस और 5 फॉरेनर्स, टोटल 11 पेलोड्स. टोटल नेशंस इन्वॉल्व 20, EU, बल्गेरिया, नासा, इंडिया. ₹380 crore एक्सपेंडिचर. टोटल लाइफ स्पैन 2 year but hardly worked 312 days. Successful? Yes. Why? Melting of star sensors. ISRO report 90% of targets are achieved. So successful. 80,000 photographs. 50% moon surface mapping first. 90% of moon surface resource detected too. 22 अक्टूबर 2008 यहाँ इंडिया से, ये 100 किलोमीटर. 12 नवंबर 2008 यहाँ मून पे. लूनर पोलर ऑर्बिट, पिक्चर्स शॉट्स, रिमूव सेंसिंग सैटेलाइट्स, पोलर ऑर्बिट्स. अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, presence of water on moon surface detected, iron bearing mineral pyroxene detected. In earlier mission only craters were detected. Our mission also found out presence of peak on moon surface. Picture from 100 kilometer from far from moon surface. Earlier mission 200 kilometer. फिर USA, फिर रशिया, फिर जापान, फिर EU, फिर इंडिया, 5th country. चंद्रयान फर्स्ट, AIAA space around 2009, American Institute of Aeronautics and Astronautics, also known as MOM. Mangalyaan first, second interspace mission, first interplanetary mission. Why Mars? Lot of similarity like Earth, moderate temperature in some areas, presence of ocean, they have salinity too, seasonal variation. How our mission is better than earlier mission? In very first attempt, India became successful. It was cheapest mission among all earlier sent missions. 5 November 2013. Reach after 9 months. September 2014 PM Modi. PSLV C2S Satish Dhawan Space Center. Payloads 6 payloads, all indigenous. In November same USA Marvin. Common resource mapping, gravitational field और magnetic field. Successful mission ranking USA, फिर रशिया, फिर EU, फिर इंडिया 4th country. जापान इज नॉट हेयर. फिर एस्ट्रोसैट सितंबर 2015. टोटल लाइफ स्पैन 5 years बट स्टिल वर्किंग. मास 15-13 kg, हाइट 650 kg, दैट इज लियो ऑर्बिट.
It is a multi-weight observatory (MWO). It is an observatory spacecraft which can observe different types of wavelength generated due to different factors of phenomena. एस्ट्रोसाइट यहाँ हो गया 650 किलोमीटर. स्टडी कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक डस्ट, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एक्सेट्रा. एस्ट्रोसाइट रैंकिंग सेम एज चंद्रयान फर्स्ट. यूएसए, फिर रशिया, फिर जापान, फिर ईयू, फिर इंडिया 5th कंट्री. चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट और 2 ये 2008 22 अक्टूबर, ये 22 जुलाई 2019. PSLV C11, ये GSLV MK3 M1, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर सेम. लॉन्च मास 1380 kg, यहाँ 3877 kg. ओनली वन कंपोनेंट. फिर ऑर्बिटर वर्कड ओनली 312 दिन. यहाँ पे 3 कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर. ये सब पेलोड से वो थे. 100 किलोमीटर फार फ्रॉम मून सरफेस, कंप्लीटेड 2 years. पेलोड 11, यहाँ पेलोड 13. नेशंस इन्वॉल्व 20, ये टोटली इंडिजीनियस था. वी वर अर्लियर टेकिंग Roscosmos help in lander, but later Russia surrendered and we made it. Their landers was fashing. Rover is supposed to do chemical analysis of lunar soil and predict about past and future life. That is biosignature, part of geology. Planning was to land on South Poles, Atkin Basin, a big crater, very less impact of sun, possibility of water, possibility of past present life. India's third lunar mission and second attempt at achieving a soft landing on the moon's surface. Chandrayaan 3 mission for making future lander and rover successful. Main objectives: to demonstrate safe and soft landing on lunar surface, to demonstrate rover running on the moon, to conduct in situ experiments. Payloads: propulsion module, spectro-parliamentary of habitable planet Earth, lander module, chest, to measure thermal conductivity and temperature. Second ILSA for measuring seismic activity. Rover module, X-ray spectrometer. Future mission of India, Aditya mission. It will become India's first solar mission to understand solar mysteries, solar flare, solar winds, solar tsunami, how massive solar flare create problem for communication satellites, temperature of solar corona, sun यहाँ है solar corona. To be launched by PSLV XL variant, also known as Aditya L1, a point in space given by a mathematician Lagrange. Lagrange points. There are 6 such points where gravitational force, centrifugal force, Coriolis force are in equilibrium. Entire universe is existed due to 4 forces: gravitational force, electromagnetic force, strong force और weak force. 1.5 मिलियन किलोमीटर. फिर ये आपका L1 है. यहाँ पे हालो ऑर्बिट है. ये गगनयान मिशन. YT वीडियो न्यू चैप्टर, यूट्यूब वीडियो न्यू अपडेट्स में. इट विल बी फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया. रैंकिंग USA, रशिया, चाइना, इंडिया 4th कंट्री. 10,000 करोड़ तक. लॉन्चिंग पोस्टपोन 22-23. Astronaut Indian pilots 3-4 for 5 by 7 days. They will be in space in LEO orbit. Technical part: use of GSLV MK3 because heavyweight. Care: pad abort test, crew atmospheric re-entry experiment. Third, RLV reusable launch vehicle. India does it have 2016 experiment. RLVTD technological demonstration. Fourth, Vyomitra ISRO first humanoid woman robot. Safety before real launch. Safety trial before real launch. GSLV less weight more distance, 4000 kg into GTO. More weight less distance, 8 to 10 ton into LEO Gaganyaan.
LV, burst drop in ocean. RLV. How the mission phase of Gaganyaan will complete. Phase 1, uncrewed mission, second half of 2022. Phase 2, uncrewed mission with Vyom-Mitra, end of 2022. Phase 3, final crewed mission 2023. Roscosmos, Russia is training our astronauts. Space problem challenges. Microgravity environment, effect of radiation. DRDO is working toward their space survival research. Multidisciplinary Gaganyaan, biotoilets, etc. Future of India after success of Gaganyaan space station, credibility in international scenario, assignments, space commerce, economic boost, motivation for growth, government to invest more in space mission, employment generation, technology development. International Space Station ISS. It is the space laboratory in LEO. Many countries worked in mega research. US से नासा, रशिया से रॉस्कोमॉस, जापान से जाक्सा, कनाडा से CSA, EU से ESA. Mega research funding, research contribution, long-term project, various modules and shuttle help to deliver object in space. Experiments, microgravity environment, physics, chemistry, bio experiments, superconductivity, electronics, growth and development of organisms, prototype experiments, supporting hand in space. Space Station of India, ISRO, 2030, proposed weight 20 ton, experimental laboratory for India. GPS, satellite should be inclined or transitional orbit. Purpose, navigation, through help of imaginary lines, latitude, longitudes or altitudes. Can be used for civilian or military purpose too. Area, global GPS or regional GPS. Global GPS, USA का है Navstar, navigation satellite and ranging. World's first global GPS, 1970 USA. Earlier for military purpose but later extended for civilian purpose too. India asked for its help during Kargil war. US refused. Russia, GLONASS, Global Navigation Satellite System, also known as Uragan. Russia, during Kargil war, GLONASS not installed. Few satellites were installed in India. China, BeiDou, also known as Compass, China, got globalized in 2020. EU, Galileo, EU, not yet globalized. Read Bhuvan here. ठीक. Regional GPS of India, Gagan, GPS aided geo augmented navigation satellite system, or IRNSS. Gagan, to modernize air traffic. We were actually using radar system. Ravi, Rashmi, Aparna, Indra, Rajendra, etc. But many problems, bad weather, congestion times while takeoff and landing. Gagan, AAI or ISRO. AAI funding, ISRO 3 constellation of 3 satellites, GSAT 8 2011, GSAT 10 2012 और GSAT 15 2015. फिर IRNSS. Story starts from Kargil War, 1998 to 99. We did not have GPS at that time. 2006, GOI planned to bring a regional GPS for military purpose only initially. 7 constellations of satellite, GEO, LE3, GEO3, GTO4. We used Pinaka, पाक से ये ठीक. 2 closest point can separate. Land bound 10 m resolution, areas 20 m resolution. कवरेज है ये 1500 किलोमीटर तक का वो कर रहा है. ठीक है, इंडिया से 1500 किलोमीटर का. लैंड बाउंड्री का 10 mm रेजोल्यूशन. ठीक, एरियाज 20 mm रेजोल्यूशन. बेटर रेजोल्यूशन हैं इसके. IRNSS सैटेलाइट्स, IA, IB, IC, ID, IEF, IG तक इनिशियली लॉन्च टू मिलिट्री पर्पस. पेलोड ऑटोमेटिक क्लॉक टाइमिंग टू सेट लोकेशन एंड टाइमिंग. एक्यूरेसी इसकी है रिप्लेस्ड IA 1H फेल. ठीक,
IRNS में 2 सिस्टम आर वर्किंग है, SPS और PPS। SPS में स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम है, इन्फो यूज्ड फॉर सिविलियन पर्पस। PPS में आपका है प्रिसिशन पोजीशनिंग सिस्टम यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, इंक्रिप्टेड सिस्टम। PM Modi dedicated IRNS to fishermen of India. Why? Difficult to trace boundary while fishing in oceans. So, Navik, navigation Indian constellation, a device connected to IRNSS. Qualcomm Technologies has unveiled mobile chipsets supporting Navik, giving internet facilities with help of IRNS satellites. Institutional setup 1962 Indian National Committee for Space Research INCOSPAR PM Nehru Chairman Vikram Sarabhai report India should have a specific organization for space affairs 15 August 1969 ISRO established headquarters Bengaluru 1972 Department of Space established ISRO brought under DOS PM फिर DOS फिर ISRO रीजनल सेंटर्स ISAC ISRO सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर बेंगलोर सैटेलाइट डेवलपमेंट सेंटर है। फिर आपका VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, ठीक, डेवलपमेंट सेंटर। फर्स्ट सेट SLV रोहिणी 1983 फ्रॉम थुम्बा रीनेम्ड एज VSLV। HDSC सतीश धवन SC श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया। SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। LPSC लिक्विडेशन प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तमिलनाडु महेंद्रगिरी। ये आपका इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन है। GSLV DS सेट IG 5 जनवरी 2014। ISTRAC ISRO टेलीमेंट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क बेंगलोर। फिर आपका MCF मास्टरली कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल और कर्नाटका। ये रेगुलेशन ऑफ इनसैट GSAT फैसिलिटीज़ ये सब है। इसके बाद आपका है NRSA और NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद तेलंगाना एजेंसी सेंटर, ठीक है। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो गया, उसके नीचे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद है भुवन लाइक विकीमेपिया GPS टावर वॉक सैटेलाइट वाला भुवन मैपिंग नॉलेज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वेदर फोरकास्ट मोबाइल मैपिंग मेन एक्सेट्रा। 2009 prototype experiment slow internet at that time Bhuvan work on it then 3 constellation of satellites Resourcesat Cartosat 1 Cartosat 2 digitization of land records Bhuvan Panchayat। International space missions New Origin 2006 launched from Cape Canaveral launching site of NASA to study Pluto other Kuiper belt objects। UN International Astronomical Union IAU proof and verification of international space astronomical findings। एग्जाम्पल इसका है इस प्लूटो 9th planet or not। astronomical unit mean distance between center and sun and center of earth sun। ये प्लूटो यहाँ है। ये आपका हेलिसोफेयर हो गया, ठीक। हीलियम का इफेक्ट है यहाँ H+H = He फ्यूज़न डिस्टेंस इफेक्ट। ये इंटरस्टेलर स्पेस है। इफ मिशन फॉर प्लूटो बट यूरेनस और नेपच्यून फ्लैट फोटो ऑल्सो कैप्चर्ड। सो हाईबी मिशन for Uranus and Neptune. Planets are planets in certain condition. They are massive mass. They have own gravity. They have their own orbit. Generally, planets are larger than satellite. They revolve around the sun. तो प्लूटो ऊपर से चारों को नहीं वो कर रहा था, बस आखिरी में और सन के रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। इसके बाद IAU Pluto is not among 9 planets. Pluto is a dwarf planet. New Origin work has been extended till 2021 still working. Juno mission 2018 mission means में GSI. How
Juno mission is fruitful to understand origin and evolution of Earth. Cape Canaveral, NASA, orbiting around Jupiter. Second spacecraft after nuclear-powered Galileo orbiter to orbit Jupiter. 1995 to 2003. Earth's past equal to Jupiter's present. Provide light on Earth's origin. Titan mission. Proposed launch date between 2020 to 2029 to study Saturn and its moon, merging ESA's Titan and Enceladus mission with NASA's Titan Explorer study. TSSM, Titan Saturn System mission, an orbiter, two Titan exploration probes, hot air balloon that will float in Titan's cloud, a lander to trace methane sea presence. कैसेनी ह्यूजेंस, कैसेनी आपका ऑर्बिटर हो गया, ह्यूजेंस आपका लैंडर हो गया. 1997 फ्रॉम केप कैनेवरल. ठीक. Unmanned spacecraft sent to planet Saturn. 4 space probe to visit Saturn. First to enter orbit. Completely destroyed in 2017. Achievements: fly mission for Titan. Revealed rain, river, lake, geyser, etc. Hurricane on Southern Pole. NASA to launch Dragonfly 2026. Why to study Titan? Titan is an analog to very early Earth and can provide clues to how life may have arisen on our planet. Larger than Mercury and plus second largest moon in our solar system. Mars Science Laboratory MSL 2011 Cape Canaveral. Robotic space probe mission to Mars by NASA, which successfully landed Curiosity rover 2012. Previous Mars rover Spirit or Opportunity. Scientific goal of MSL: determine landing sites and habitability, including role of water. Study of climate. Geology of Mars. Objective: study of organic carbon compounds, identify biosignature, investigate chemical and mineralogy of Martian surface, assess Martian atmosphere. Curiosity rover 2011 car-sized exploring Gale crater on Mars as part of NASA's MSL mission. Since landing 2012, it is still working. ExoMars program by ESA plus Roscosmos. Whether life has ever existed on Mars. 2 missions. 2016 ट्रेस गैस ऑर्बिटर ओस्किया पेरेली, ये सिग्नेचर हो गया. ठीक. फिर 2022 फ्यूचर में एक्सो मार्स रोवर. मैसेंजर मिशन नासाज ऑर्बिटिक स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड मरकरी बिटवीन 2011-15. NASA's Orion spacecraft. It is designed to carry humans further than they ever gone before. Also care, experience, Renetri, atmosphere crew is in news. Maven, NASA. Mars atmosphere and volatile evolution. November 18 November 2013. Went into orbit of Mars in September 2014. Indian MOM 5th November. Discovered 2 type of Martian auroras, diffuse or proton. Demonstrated that majority of the CO2 has been lost to space. Solar missions. Parker Solar Probe 12th August 2018. NASA. First solar mission to get closer to Sun, 4 million miles from Earth's surface. Part of Living with the Star program. Solar Orbiter mission SOLO. ESA plus NASA Feb 2020. First mission that will provide image of Sun's North and South Pole. 7-year mission. Will come within 26 million miles of Sun. Titanium shield. Can bear up to 970 Fahrenheit. Punch mission future. NASA. Polarimeter to unify corona and heliosphere. Dipankar Banerjee, co-investigator. Expected to be launched in 2022. Kepler mission. It is a space telescope. Presently orbiting Sun from 156 million km from Earth, but it is not working for surviving Milky Way galaxy region, so as to discover 100 of Earth-sized and smaller planets in and around
habitable zone. Goldilocks zone. It is a range of orbital distance from the star at which liquid water can exist on planet surface. TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, NASA. Look for planets orbiting in the Earth's sky, brightest star. Mission will monitor at least 2 lakh stars for signs of exoplanets. Asteroid missions. Dawn Asteroid Mission 2007 to study objects in asteroid belt ended. Asteroid Iesta. NASA's OSIRIS-REx 2016. Asteroid Bennu. Soil also collected. Discovered hydrogen and oxygen molecule traces. Water potential for life. Voyager mission 1970s. Still going in interstellar space. How? H has nuclear reactor fuel. Before it, longest going Pioneer 10 to 11 Voyagers. ISAT or ISAT 2 NASA. Ice cloud and land elevation satellite. It will map ice sheet melting in Antarctica. The resulting rising sea level across globe, thereby improving climate forecast. Is measuring the ice height to inside an inch. Artemis program Moon 2024. Acceleration, reconnection, turbulence and electrodynamics of Moon's interaction with Sun. NASA will land first woman and next man to Moon in 2024. To measure what happens when the Sun's radiation hits our rocky Moon, where there is no magnetic field to protect it. ICON mission 2019 NASA to detect dynamic zones of Earth's ionosphere. Change mission China. Moon goddess Chinese term Chang. 4 phase. First orbiter Chang 1 2007. Second 2010. Second lander and rover. Third 2013 और fourth 2019. यहाँ पे will perform through U22 rover South Pole Aitken Basin. फिर third collected moon soil sample. ठीक, ये landed on backside also. Tidal locking only one. Fourth, यहाँ तक 3 तक succeeded है. Fourth, will establish robotic station on moon. Hayabusa और Hayabusa 2 Japan. Asteroid sample return mission. Asteroid Itokawa. China's artificial moon project 2020 extended 2022-23, creating an artificial moon that would be bright enough to replace the street lights in southern city of Chengdu. ये आपका ठीक है. अर्थ 500 किलोमीटर यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट आपका है विद मिरर्स, लाइटिंग अप एन एरिया विद डायमीटर ऑफ 10 to 80 kilometers. Enlightened satellite, it is said to be 8 times brighter than real moon. ठीक है. मिरर्स ठीक है. अर्थ से सन, डे ये नाइट वाला एरिया चांगदू. Help reducing huge electricity consumption cost.